On examination, introduction the author Sir Winston Spencer Churchill. ये होचंती ऑन एग्जामिनेशन रो लेखक अंकर बर्थ डेट है 1874 एंड डेथ है 1965. He served as the Prime Minister of England twice time. दुई थर से इंग्लैंड प्रधानमंत्री होते. फर्स्ट टाइम होते से 1940 to 1945 प्रथम थर होते एवं 1951 to 1955 सेकेंड टाइम होते. Churchill was a famous statesman, orator, British Army officer, historian and writer. Churchill जने स्टेट्समैन थिले, ओराटर थिले. स्टेट्समैन माने मो कहितली चैप्टर एक्सप्लेनेशन कला बेले स्टेट्समैन होचंती जने पॉलिटिशियन. स्टेट्समैन जने पॉलिटिकल लीडर अटंती एवं ओराटर कहितली पब्लिक स्पीकर बोली कहितली. एवं से ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थिले, जने हिस्ट्रियन ऐतिहासिक थिले एवं राइटर जने गुड राइटर थिले, लेखक थिले. ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1953. 1953 मसीह रे से नोबेल पुरस्कार प्राप्त करथिले. एट हेरो इज टेकन फ्रॉम चैप्टर 2 रो एट हेरो उद्धृत कराइछि. द ऑटोबायोग्राफीज नेम इज तांकर ऑटोबायोग्राफी रो नाम हला माय अर्ली लाइफ, जहाँ कि 1930 रे ये पब्लिश है. मोरल थीम ए चैप्टर मोरल थीम कौन? इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी, हार्डवर्क, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड प्रॉपर एजुकेशन. आर मोरल थीम हला इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी. ऑनेस्टी मीन्स साधु बा सच्चोट. हार्डवर्क कठिन परिश्रम. सेल्फ कॉन्फिडेंस निज उपरे संपूर्ण रूपे विश्वास रहा आवश्यक. एंड प्रॉपर एजुकेशन आउ भल भाव परिश्रम करी पाठ पढ़ा उचित. यार है मोरल थीम. अच्छा, नोट्स एंड ग्लेसरीज देख. एप्रेंशन मीन्स फियर ऑफ नॉट डूइंग वेल. स्कार्सली, ओनली, जस्ट, ऑलमोस्ट, नॉट. इनहॉस्पिटेबल, नॉट प्लेजेंट, अनकंफर्टेबल जोटा कि कहा जाए. इनवेरिएबल, ऑलवेज. फैंसीड, अट्रैक्टेड. प्रिवेल्ड, विन. डिसर्नमेंट, जजमेंट. सॉट, टू सर्च. रिफ्लेक्शन, थॉट. ब्लॉट एंड स्मजेस, ड्रॉप्स ऑफ टीयर्स मेड स्ट्रेन्स ऑन पेपर. यूजर्स, attendant. Fullscape, exam copy. Slender, smaller in size. Indication, a sign. Towered, top. Far front, front. Consequence, results. Irreverent comment, disrespectful remark. There, like examinations. No, the writer didn't like examinations. He stated these examinations were a great trial to him. लेखक एग्जामिनेशन को पसंद करथिले कि ना? लेखक एग्जामिनेशन को पसंद करू नथिले कारण तांको कहिबा अनुसार एग्जामिनेशन गुड़िक सबुदिन तांको पई परीक्षा ही थिला. मेंशन द सब्जेक्ट्स दैट वेर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर मानकर डियरेस्ट सब्जेक्ट कौन थिला? लाटिन एंड मैथमेटिक्स विथ द सब्जेक्ट्स डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स. परीक्षक मानकर अति प्रियर विषय थिला लाटिन एवं मैथमेटिक्स. विच सब्जेक्ट्स डिड द राइटर लाइक द मोस्ट? लेखक केउ सब्जेक्ट को अधिक पसंद करथिले? द ऑथर लव्ड हिस्ट्री, पोएट्री, राइटिंग एसे. इतिहास, कविता एवं निबंध लेखन को से अधिक पसंद करथिले. व्हाट वाज द सैड स्पेक्टाकल फॉर द राइटर इन द एग्जाम हॉल? ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट पिला माने. व्हाट वाज द सैड स्पेक्टाकल? सैड स्पेक्टाकल माने कौन? फॉर द राइटर इन द एग्जाम हॉल, परीक्षा हॉल रे राइटरंकर एमती कौन होता सैड स्पेक्टाकल? देख,
The sad spectacle was the writer unable to answer a single question in the Latin paper. माने परीक्षा हॉल रे लाटिन एग्जाम हेबा समय रे कौन ना ऑथर बा राइटर कौन करथिले सिंगल गोटे क्वेश्चन रो आंसर लिखि पारि नथिले एंड लुकिंग एट हिज टीयर स्टेन्ड आंसर पेपर एवं लुकिंग गैजली माने से परीक्षा पेपर को भयभीत एवं दुखरे से पेपर को देखिथिले सैड स्पेक्टाकल माने दुखपूर्ण चाहाणी रे देखिबा एठारे राइटर कौन करथिले तांको पेपर को चक्षुरे तांकर अश्रुपूर्ण थिला एवं से अश्रुपूर्ण आखिरे बा आखि छल छल आखिरे लुह भरा छल छल आखिरे से आंसर पेपर को देखिथिले सेतिबे राइटर तेरे से स्पेक्टाकल यूज करछन्ते. हाउ डिड द राइटर परफॉर्म इन द एग्जाम? He performed poorly, being placed in the third or lowest division of the fourth or bottom form. What reason does the writer give for his not doing well in the examinations? The examination questions were set from Latin and mathematics. The writer had no knowledge in them, so the writer did not do well in the examination. Examination question गुड़िक सेट करा लाटिन रे मैथमेटिक्स रे किंतु राइटर से लाटिन एवं मैथमेटिक्स रे कौन सी नॉलेज नथिला तेणुक राइटर तांको एग्जामिनेशन हॉल रे भल करि पारि नथिले. व्हाट डिड द राइटर राइट इन द आंसर बुक फॉर द लाटिन पेपर? राइटर आंसर पेपर रे से कौन लिखिथिले? द राइटर रोट हिज नेम द नंबर ऑफ द क्वेश्चन आई. राइटर से आंसर पेपर ऊपर टॉप रे तांका ना लिखिथिले तापर तळे क्वेश्चन 1 लिखिथिले एंड पुट ए ब्रैकेट तापर ब्रैकेट देथिले राउंड ब्रैकेट देथिले इन द आंसर बुक फॉर द लाटिन पेपर रे से एतिकी काम करथिले. व्हाट वाज द राइटर्स पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन? इन द मेरिट एडमिशन समय रे राइटर कर पोजीशन किपर थिला मेरिट लिस्ट अनुसार? In the merit list, the writer was placed in the third or lowest division of the fourth or bottom form. चतुर्थ श्रेणी पढ़ला बेले राइटर मेरिट लिस्ट अनुसार थर्ड आउ लोएस्ट डिवीजन रे थिला. Whom does he give the credit of his success in the entrance examination? Why? Entrance examination रे से तांकर सक्सेस पाए बोली कहा को क्रेडिट जणाउछंदी? He gives Dr. Weldon the credit for his success in the entrance examination. डॉक्टर वेल्डन जे कि तांकर हेडमास्टर थिले से तांकर सक्सेस रे ऑथरंकर सक्सेस रे से एही हेडमास्टर डॉक्टर वेल्डन को तांकर क्रेडिट जणाउछंती. द राइटर गेव द क्रेडिट टू हिम एज ही वाज एबल टू जज क्योंकि से कारण से बहुत भल भाव जजमेंट करथिबा जोको से संपूर्ण क्रेडिट डॉक्टर वेल्डन को जणाउछंती. हाउ डिड ही बिकम द लास्ट बॉय इन द क्लास? से क्लास रो सभा शेष केमिति थिले? As two students below his name in school list disappeared due to illness or some other reason, he became the last one in the class. दुईटी स्टूडेंट तांकठू तळे थिले कारण से लिस्ट डिसअपियर्ड होइथिले देखा देई नथिले से एग्जाम टाइम रे. He became the last one in the class. सेही परे से दुई जण स्टूडेंट रो ऊपरे से थिले किंतु क्लास श्रेणी रे सबुठु तळे थिले. व्हाट वाज ही मीन बाय आई गेन्ड नो मोर एडवांटेज फ्रॉम द अल्फाबेट देन फ्रॉम द वाइडर स्पेयर ऑफ लेटर्स? बाय आई गेन नो मोर एडवांटेज देन फ्रॉम द वाइडर स्पेयर ऑफ लेटर्स द राइटर मीन्स दैट हिज नेम वाज रिटन एट द बॉटम ऑफ द स्कूल लिस्ट एज हिज करेक्ट नेम स्पेंसर चर्चिल स्टार्टेड विथ एन S. Only two students were below him in the list. He did not get advantage because the names of the new boys were printed in the school list alphabetical order. What is the custom of calling the roll at Harrow? Harrow ठारे रोलिंग बा रोल करा जाए स्टूडेंट मानकर किपरि कस्टम थिला प्रथा किपरि थिला? द कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोल एट हेरो ठारे एही प्रथा थिला
that the students walk past a teacher. स्टूडेंट गुड़िक चल चल टीचर पाक आसती इन ए लाइन छिड़ा हुंती एंड रेस्पॉन्ड वन बाय वन व्हेन देयर नेम्स आर कॉल्ड एवं से जेतेबेले ना को डाकती जनक पर जड़े रेस्पॉन्ड करती. व्हाट इज द कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोल एटॉन एटॉन किपर कस्टम थिला. द कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोल एट एटॉन इज दैट द स्टूडेंट स्टैंड इन ए ग्रुप गोटे ग्रुप रे स्टूडेंट मैंने छिड़ा होते एंड लिफ्ट देयर हैट्स एंड रिस्पॉन्स टू देयर नेम्स एवं तांकर नाम डकाले से हैट को उठाउथिले टोपी को उठाउथिले. व्हाई ही इज लास्ट ऑफ ऑल व्हाई डिड पीपल से लोक मैंने कहीं कहते जे ये सभा लास्ट अच्छे. द पीपल सेड सो बिकॉज द पीपल वांटेड टू नो व्हाई द राइटर वाज द लास्ट ऑफ ऑल. लोक मैंने सब बेले कहते जे ये कौन पे लास्ट अच्छे कारण राइटर लास्ट थिले. टू मच बाय वेयर एज हिज फादर लॉर्ड रैंडल्फ चर्चिल. राइटर बापा रैंडल्फ चर्चिल despite his resignation as the leader of the House of Commons and Chancellor of Exchequer dominated in the field of politician. तांकर बाबा स्पेंसर चर्चिल बाबा कौन थिले ना हाउस ऑफ कॉमन्स लोकसभा नेता थिले एंड चांसलर ऑफ एक्सचेकर माने जड़े अर्थमंत्री थिले. डोमिनेटेड इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स एवं से ए फील्ड रे से थिले.